Good morning, students. In the last video, we have just completed the laws related to gases like Boyle's law, Charles' law, Hamilton law, pressure temperature law, and Avogadro's law. Today, we are going to start a new topic, that is ideal gas equation. Ideal gas equation, yeah, it is also known as equation of state for ideal gas. Equation of state for ideal gas. Now, first of all, definition of ideal gas. The equation which gives simultaneous effect of temperature and pressure on volume of gas is called ideal gas equation. Now, equation is that ideal gas equation is PV is equal to nRT. This is your equation, ideal gas equation. Now let us derive the equation. Derivation of ideal gas equation. That's very simple derivation. Let according to Boyle's law, let us combine all the laws which we have done till now. According to Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure, where number of moles and temperature is constant. Given mass of gas means moles of gas is constant. According to Charles' law, according to Charles' law, volume is directly proportional to temperature, and according to Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles. These are the three laws: Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law. The combining all these three laws, combining all these three equations or three laws, all these three equation. Let it, this is equation 1, that this is your equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. अगर इन तीनों equations को combine किया जाए, then we can write volume is proportional to directly proportional number of moles, directly proportional to temperature, and inversely proportional to pressure. Or we can say PV is proportional to NT, or PV is equal to nRT, where R is universal gas constant. Now this is your ideal gas equation. The derivation is very simple. According to Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure. Charles' law, volume is directly proportional to temperature, and Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles.
Combining all these three, it will result in PV is equal to nRT. Ideal gas equation is formed. Now we can also derive combined gas equation from this ideal gas equation. Now let us do combined gas equation, an equation which gives all the three laws once again. Now PV is equal to nRT, or PV upon T is equal to nR. Now in this equation, for given mass of gas, N is equal to constant, R is also constant, so we can say that PV upon T is equal to constant. Therefore P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. This is our combined gas equation. Now this equation gives all the three laws. All the three laws like, let P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Now if our Boyle's law, according to Boyle's law, if temperature is constant, then temperature will cancel each other. P1 V1 becomes equal to P2 V2. If our temperature is constant, means Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2, because temperature is constant, it will cancel out. Again, if our pressure is constant, upon T1 is equal to V2 upon T2. Now this time pressure is constant, it will cancel out, तो V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, चार्ल्स लॉ हो गया हमारा. और प्रेशर वॉल्यूम लॉ, जो हमारा एमंटन्स लॉ था, उसमें हमारा था वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो P1 अपॉन T1, P1 V upon T1 is equal to P2 V upon T2. Now this time volume is equal, volume remains same, volume is constant, so P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. तो ये जो हमारी combined gas equation है, it derives all the three laws also known as combined gas equation. तो ये आपके दो equations हैं, PV is equal to nRT ideal gas equation and P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Both are very important as far as your numericals are concerned. For example, let us do a numerical. For example, calculate temperature at which volume of gas at 2 atmospheric pressure will be twice the volume at STP. Means STP पर जो वॉल्यूम है, let at standard temperature 273 Kelvin, pressure 1 atmospheric, let volume is V. Let volume is V. It is your T1, P1 and V1. Now the question is at what temperature which is to be calculated and pressure 2 atmospheric, volume will be twice of the initial volume. V का जो हमारा वॉल्यूम डबल हो जाए, तो किस टेम्परेचर पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वॉल्यूम डबल हो जाएगा STP पर जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले. So this is your question and the question is very simple. We know according to combined gas equation P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So solving this, P1 1 atmospheric, volume is V, temperature 273 Kelvin. Now P2 2 atmospheric, P2 is 2 atmospheric. अगर प्रेशर 2 atmospheric हो, वॉल्यूम डबल हो जाए,
तो टेम्परेचर T2 हमारा क्या होगा। नाउ वी कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर वेरी इजीली। T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2V अपॉन V इंटू 273. दिस इज 273. So it will be 1092 Kelvin temperature. At this temperature volume will be double and pressure will be 2 atmospheric. तो इस तरह से P1 V1 अपॉन T1 पर आपके न्यूमेरिकल होते हैं, और आल्सो न्यूमेरिकल ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, दैट दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. फॉर एग्जांपल, what will be volume of 0.5 moles of carbon dioxide at 300 Kelvin and 2 atmospheric pressure. So according to ideal gas equation, PV is equal to nRT. So V will be equal to nRT upon P. nRT upon P. Now what is the value of R? इसके बाद बताते हैं आपको R की वैल्यूज क्या होंगी. सो N इज 0.5 इंटू 0.0821 लीटर एटमोस्फेरिक. R की वैल्यू हमारी है. टेम्परेचर इज 300 केल्विन. प्रेशर इज 2 atmospheric. So it will be 0410 into 300 into 0.5. So your answer will be, answer will be 15.5 to 150. तो 15 जो कि 0.61 लीटर और 615 ml. That will be the answer of your question. तो इस तरह से हम वॉल्यूम है या प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. मेन बात यहाँ पर आती है आपकी, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर. आर की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू 0.0821, तो 0.0821 है या 0.08314 है या 8.3141 है. डिफरेंट वैल्यूज हमारी आर की होती हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिट वैल्यू ऑफ आर. वी नो पी वी इज इक्वल टू nRT. So R will be equal to PV upon NT. If we take pressure 1 atmospheric, volume 22.4 liter for 1 moles, temperature standard 273 Kelvin. So now your R will be 0.0821 liter atmospheric per Kelvin per mole. This is the unit of the value of R. Here if we take again pressure 1 bar 22.7 लीटर. 1 बार प्रेशर अगर होता है तो हमारा स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम है 22.7 होता है. ध्यान रखना इस चीज़ को. 1 मोल 273 केल्विन. नाउ 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. तो ये जो हमारी यूनिट आर की जो वैल्यू है वो हमारी यूनिट पर डिपेंड करेंगी. अगर हमारी यूनिट वॉल्यूम और लीटर, वॉल्यूम और प्रेशर की यूनिट लीटर और एटमॉस्फेरिक है तो 0.0821, लीटर और बार है तो 0.08314. अगर एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स मीन्स प्रेशर इन पास्कल, तो 10 raised to the power 5 पास्कल. 1 बार इक्वल टू 10 raised to the power 5 पास्कल. वॉल्यूम 22.4 इंटू 10 raised to the -3 मीटर क्यूब. ये मीटर क्यूब में है और ये आपकी पास्कल में प्रेशर है. 1 मोल इंटू
273 Kelvin temperature. Then it will be 8.314 Pascal meter cube per Kelvin per mole, और it is also 8.314 joules per Kelvin per mole, क्योंकि हमारा जो पास्कल मीटर क्यूब है इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, वर्क डन। न्यूटन मीटर भी आप इसको मोल बोल सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज़ है, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर। बेसिकली आपको जो याद रखनी है, आर की वैल्यूज़ याद रखनी है। आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमोस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, या फिर आर इज इक्वल टू 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, और और इट में भी 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल अगर SI यूनिट्स हैं तो, या फिर 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। These are the different values of R which we will use in numericals according to units of volume and pressure. यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर को देखकर हम R की वैल्यू यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल्स, आइडियल गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस इक्वेशन पर हमारे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से इसमें डेंसिटी, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, significance of ideal gas equation. Now we know P is equal to nRT or P is equal to N upon V RT, and number of moles are given by given mass of gas, RT upon molecular mass of gas into volume. Now mass of gas divided by volume, this mass of gas divided by volume is also known as mass by volume, which is density. So pressure is equal to density upon molar mass into RT, or we can say density is equal to MP upon RT. This is ideal gas equation in terms of density or importance of ideal gas equation. So ideal gas equation and its significance and numericals based on these equations. अब आपको जो आज करना है वो प्रैक्टिस करनी है इन न्यूमेरिकल्स की। P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 first, second PV is equal to nRT, and third density is equal to MP upon RT. Based on these three numericals, three equations, you will practice the numerical. इससे अलग आपके अब जो नेक्स्ट है एक लॉ और है हमारा, वो भी आज हम करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। शायद अगर उस लॉज को आज हम लेते हैं तो आपके आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आज आप इन न्यूमेरिकल्स पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ और ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।